ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिक्चर्स का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सिंपली आप वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। Audio Jungle. सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को अपने मॉडल का जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना है। एंड गाइस मैं आप सभी को इरेज करने से पहले एक बात बता दूं कि गाइस आपका जो मॉडल होगा वो गाइस आपकी चेयर के ऊपर होना चाहिए किसी, क्योंकि यार हम जो है मॉडल को जो है चेयर के साथ ही इरेज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ब्रश की सेटिंग देख लो गाइस। ठीक है, हार्डनेस को आप 90 तक रखना है, उसके बाद इरेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से इसको इरेज कर लें। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh.
कॉन्ट्रास्ट मैच हो चुका है। अब आप सबको चले जाना है ऐड फोटो में एंड यहाँ से जो पीएनजी हमें यूज़ करना था आपको उसको ले लेना है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फुल स्क्रीन कर देना है एंड कुछ हिसाब से ऐड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग लग रही है फोटो, ठीक है। बट आप सभी को अभी क्या करना है, आप सभी को इस फोटो को सेव कर लेना है एंड जो असली रिजल्ट आएगा वो लाइटरूम में रीटचिंग के बाद ही आएगा, ठीक है। तो अब चले जाना लाइट वाले ऑप्शन में, फिर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को आपको कम कर देना है एंड शेडो जो है इसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस आप सभी को जो व्हाइट है इसको आपको कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। फिर इसके बाद चले जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड गाइस इसका जो टेम्परेचर है इसको माइनस कर देना है। फिर चले जाना कलर मिक्स में, फिर ऑरेंज यहाँ पे ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, स्काई ब्लू को एंड गाइस इसका सैचुरेशन आप सभी को कम करना है, ठीक है, डार्क ब्लू का। अगर आप ब्लू कलर रखना चाहते हो तो सैचुरेशन प्लस कर लेना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। फिर चले जाना येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस और सैचुरेशन प्लस कर देना है एंड चले जाना ऑरेंज कलर में, इसका सैचुरेशन जो है माइनस कर देना है, ठीक है, एंड ल्यूमिनस है इसको बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सबको अगर देखो गाइस आपकी मर्जी है, मैं आपको ज़्यादा कुछ वो नहीं बोलूँगा, ठीक है। आपको बैकग्राउंड अगर ब्लू रखना हो तो आप सैचुरेशन और ह्यू प्लस में रखना। बाकी उसके बाद आप सभी को यहाँ से चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डालना है, ठीक है। एंड उसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, तो आपको उसको ही बढ़ा देना है एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस नोट डायरेक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है एंड गाइस जो कलर नोट डायरेक्शन है उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है गाइस। तो आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।